नमस्ते बिटिया, खुश रहो बिटिया। I JVN Dr. Namrata Nandwana, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science of JAYOTI VIDYAPEETH Women's University, Jaipur. Today I will discuss about ankylosing spondylitis. So, what is ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis is a chronic, progressive, immunomediated inflammatory disorder of unknown cause that primarily affect the spine. Means ankylosing spondylitis धीरे धीरे प्रोग्रेस होने वाली डिजीज़ है। इम्यूनो मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। इन्फ्लामेटरी मतलब स्वेलिंग आएगी। मेनली कहाँ पे इफेक्ट करेगी? प्राइमरली स्पाइन, मीन्स वर्टिबल कॉलम को अफेक्ट करेगी। The name is derived from Greek words ankylos means fusion मतलब जोड़ना, and spondylos means vertebra. ठीक है। itis denote inflammation मतलब वर्टिब्रा का फ्यूजन होना एंड इन्फ्लामेशन होना. Hence the name describe an inflammation of vertebral column. Now, ankylosing spondylitis is one of the seronegative spondyloarthropathies and has a strong genetic predisposition. Means ankylosing spondylitis mainly फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री है वो प्रोमिनेंट रहेगी. एंड वर्ड सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थोपैथीज मीन्स इसमें जो रोमेटिक फैक्टर रहेगा वो नेगेटिव रहेगा. लाइक जैसे रोमेटिक फैक्टर पॉजिटिव रहता है वो कौन कौन से डिजीज़ में रहता मिलेगा अपने को? रोमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE. ओके. And next, it mainly affects joint in the spine and the sacroiliac joint in the pelvis. Mainly spine को करेगा and sometimes sacroiliac joints in the pelvis. In severe cases, complete fusion and rigidity of the spine can occur. सीवियर केस में क्या होगा? वर्टिबल कॉलम का कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा और रिजिडिटी हो जाएगी. Synonyms of ankylosing spondylitis: Bacteria disease, Bacteria syndrome, and Marial Stampel. Now, epidemiology of ankylosing spondylitis. The prevalence range from 0.1 to 1% of the population. Men are affected more than women by a ratio about 3:1. The typical patient is young age group between 18 to 30 years of age. Mainly middle age को करेगा, उसमें 18 to 30 years है. और men are more affected than women. Ratio 3:1. Predominant in Caucasians worldwide. Now, etiology of ankylosing spondylitis. Etiology is unknown, but probable etiological factors are genetic predisposing. 90% of patients with ankylosing spondylitis share genetic marker HLA-B27. Tumor necrosis factor alpha, tumor necrotic factor alpha, interleukin 1R, bacteria में Klebsiella pneumoniae and some other enterobacteria. This is a etiology of ankylosing spondylitis. Now, pathology of ankylosing spondylitis. Sacroiliitis is the earliest feature. Sacroiliitis मतलब sacrum और के बीच में inflammation. The early lesion consists of subchondral granulation tissue containing lymphocytes, plasma cells, macrophages, and chondrocytes. The thinner iliac cartilage is eroded first. Eroded first मतलब वहाँ से erode होने लगेगा. Followed by thicker sacral cartilage. फिर thick होगा and both replaced by fibrocartilage regeneration and then by ossification मतलब फ्यूज होने लगेगा. Ultimately joint totally obliterated. This progression is seen in radiographically investigations. Now in the spine,
Initially, inflammatory lesions occurs at the junction of annulus fibrous of the intervertebral disc cartilage and the margin of the bone. स्पाइन में क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी लीजन्स स्टार्ट होंगे एनुलस फाइबर्स के जंक्शन पर एंड इंटरवर्टेबल डिस्क कार्टिलेज एंड मार्जिन ऑफ द बोन पर धीरे धीरे ऑसिफिकेशन स्टार्ट होगा. द आउटर एन्युलर फाइबर इरोड होगा, फिर वो बोन्स में चेंज होगा और फिर बोनी एक्सट्रूजन की स्टार्टिंग हो जाएगी जिसको बोलेंगे सिंडिस्मोफाइट्स. व्हाट इज सिंडिस्मोफाइट्स? सिंडिस्मोफाइट मीन्स ओवर ग्रोथ ऑफ बोन फॉर्मेशन. ठीक है, विच मीन्स ऑस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे which grow ultimately bridge the adjacent vertebral bodies. धीरे धीरे ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में एंड एक रिजिडिटी अपीयर हो जाएगी. तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसे दिखेगी? लाइक बैम्बू स्पाइन. Now, ascending progression of this process leads to the radiographic appearance of bamboo spine. फिर क्या होगा? नीचे से धीरे धीरे स्टार्ट होगी एंड फिर ये रेडियोग्राफिक अपीयरेंस में कैसे दिखेगी? बैम्बू स्पाइन. लाइक जैसे ये नॉर्मल स्पाइन है, फिर अर्ली चेंजेस आएंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में. तो जॉइंट का जो स्पेस है वर्टिब्रल कॉलम का वो अभी बहुत कम है. ठीक है, मतलब बिल्कुल माइल्ड चेंजेस ही हुए हैं. ठीक है, स्लाइट इन्फ्लामेशन कॉज हुआ. सीवियर केसेस में जो वर्टिब्रल कॉलम का स्पेस है एक दूसरे वर्टिब्रा के जो कॉर्नर है वो इरोड हो गए हैं एंड वहाँ पे उसके बाद में ओवर ग्रोथ हो गया है एंड फ्यूज़ होने लग गया है. तो दोनों स्पेस कम हो गया है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्पेस कम हो गया, तो वो बैम्बू स्पाइन की तरह नज़र आ रही है. Now, peripheral joint arthritis in ankylosing spondylitis can show synovial hyperplasia, lymphoid infiltration, and pannus formation. अगर पेरिफेरल जॉइंट आर्थराइटिस है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो वो क्या होगा? साइनोवियल हाइपरप्लेजिया, साइनोवियल मेम्ब्रेन का बढ़ जाना, लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन और वहाँ पे पेनस फॉर्मेशन. द एंथीसाइटिस मतलब द इन्फ्लामेशन ऑफ एंथीसिस साइट ऑफ टेंडिनस और लिगामेंटस अटैचमेंट टू बोन is also a common pathological change and they may eventually under calcification. Now, rest will be topic discussed on next lecture. Thank you.